Friends, welcome back to my YouTube channel. In this class, I will discuss two PYQs of GATE which are based upon the first chapter of thermodynamics, that is thermodynamic system and processes. Before starting, I must say that you should subscribe to this channel and of course like it and share it to your friends. So the first question that I am going to discuss was asked in the year GATE 2019. ये सेट 1 में पूछा गया था GATE ME 2019. So the question was like this: during a non-flow thermodynamic process 1-2 executed by a perfect gas, the heat interaction is equal to the work interaction. Q12 is equal to W12 when the process is. And the options are isentropic, polytropic, isothermal, adiabatic, and this was asked in the GATE Mechanical 2019 set 1. So during a non-flow thermodynamic process, non-flow means this is a case of closed system. This is a case of closed system. We know that in case of a closed system, flow means flow process occurs in an open system or control volume, but non-flow process takes place in a closed system. Only energy interaction can take place between the system and surroundings, or this closed system is also called control mass. Open system is called control volume, and this closed system is known as control mass. Here the first law equation for any process is Q12 is equal to W12 plus delta U. That we have already discussed in our lecture series. Whenever any process is undergone by a closed system, and during that process, if heat interaction, suppose this is a system and heat is being added to the system, the heat added to the system is Q12, and out of which W12 is the work done by the system, then delta U will be the increase in molecular internal energy. If the system is having no change in fact the equation is delta E, and in the absence of delta E, delta E is nothing but equal to delta EK plus delta EP plus delta U. Energy of a system, capital E refers to the energy of a system. Energy contains three terms basically. These two terms are macroscopic form of energy: kinetic energy if the system is moving, and potential energy, and the delta U is the change in molecular internal energy. In most of the cases these two terms are negligible, so that's why this equation 1 can be reduced to Q12 is equal to W12 plus delta U. This equation is nothing but based upon the energy balance principle. This equation is nothing but your energy balance principle. How this is based upon energy balance? You see, energy coming into the system in this case is Q12, and energy coming out of the system is W12, work done by the system, but the arrow sign is away from the system. It's a different thing that when work is done by the system, it is taken to be positive, but in this case whatever energy will enter into the system, this is the formula: E in minus E out is equal to delta E, where delta E is the energy of increase in energy of the system. Here Q12 is the energy that enters into the system during that process, and W12 is the energy going out of the system. These two are energy interactions taking place across the boundary. This is your system
and this is surrounding and this is boundary. Everybody knows that. सो ये एनर्जी इंटरैक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो डेल्टा ई हो या डेल्टा ई यू हो, अगर हम डेल्टा ई के और डेल्टा ई पी को नेग्लेक्ट कर देंगे तो डेल्टा ई इज नथिंग बट सेम एज डेल्टा यू. वो होता है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. ये जो यू और ई होता है ये एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये प्रॉपर्टी है. लेकिन Q12 और W12 वो एनर्जी इन ट्रांजिशन है, वो वर्क इंटरेक्शन एंड एनर्जी इंटरेक्शन, हीट इंटरेक्शन सॉरी होता है, वो बाउंड्री में अकर होता है. सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन. बट इन दिस केस इट इज गिवन दैट the equation is Q12 is equal to W12. Q12 is the heat interaction by the system during that process 1-2, and W12 is the energy work interaction during the same system during the same process by the system. So obviously in this equation delta U term is totally absent. Delta U term is हमारा equation ये हो गया ना. बेसिकली ये होता है इक्वेशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन वी नेग्लेक्ट डेल्टा ई के एंड डेल्टा ई पी, देन द इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 2, एंड दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इक्वेशन. Q12 इज इक्वल टू W12 प्लस डेल्टा यू, जिसमें ये होता है हीट इनपुट इनटू द सिस्टम, ये वर्क डन बाय द सिस्टम, ये डेल्टा यू. सपोज आई विल सप्लाई 25 किलो जूल ऑफ हीट इनटू ए closed system. Out of these 25 kilojoule work, that system does some positive work upon the surroundings and that amount is 20 kilojoule. So जो नेट रहा 5 किलोजूल, 25 से 20 अगर वर्क डन हो गया तो 5 किलोजूल will go on to increase the internal energy of the system. So that's what this equation talks about. So that's why हमारा जो इस केस में ये दिया हुआ है इक्वेशन है Q12 इज इक्वल टू W12. सो मतलब यहाँ 1-2 मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस 1-2, Q12 इज द हीट इंटरेक्शन. इनफैक्ट दिस इज टेकन टू बी द हीट एडेड टू द सिस्टम. अगर किस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रहा है तो ये वैल्यू नेगेटिव में हम पुट करेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अगर किस सिस्टम में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो इस वैल्यू में हम नेगेटिव, इसमें in this place I will put negative sign, there is no problem in this. So now this equation 2 as per the question is suppose Q12 is equal to W12, which implies that delta U is equal to 0. Delta U is equal to 0. But so हम ये कंक्लूजन हमको मिल गया ये इक्वेशन से, डेल्टा यू जो है जीरो हो रहा है इस प्रोसेस में. डेल्टा यू जीरो मतलब, and this is the system is a perfect gas. System contains only perfect gas. For any ideal gas we know that according to Joule's law, for any ideal gas U is a function of temperature only. U is a function of temperature only. For any ideal gas, molecular internal energy is a function of temperature only. If delta U 0 है मतलब T is equal to constant. और डेल्टा U 0 कब होता है? जब U is equal to a constant. U कांस्टेंट होगा तो डेल्टा U 0 होगा. तो U कब कांस्टेंट होगा? जब T इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि U इज ए फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस ओनली. फॉर आइडियल गैस U is a function of temperature only, where U is the molecular internal energy according to Joule's law. So delta U is equation से as per the given equation Q12 is equal to W12, we concluded that delta U is equal to 0, and delta U 0 मतलब U is constant. We know that U is a function of U for an ideal gas or perfect gas is a function of temperature only. So that's why U constant means temperature during the process is definitely constant. So we know that a process in which temperature remains constant out of the given options is isothermal.
आइसोथर्मल, क्योंकि आइसेंट्रोपिक में तो हीट इंटरेक्शन नहीं होता है और एज द नेम सजेस्ट एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक, बट नो इंटरेक्शन, हीट इंटरेक्शन इज देयर आइसेंट्रोपिक में। रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा तो आइसेंट्रोपिक होगा, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट बट नॉट टेम्परेचर, टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। पॉलीट्रोपिक तो है ये प्रोसेस जिसका इक्वेशन Pv⁴ इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है और वो आइसोथर्मल भी नहीं होता है, एडियाबेटिक से डिफरेंट एक जनरलाइज प्रोसेस है। एंड एडियाबेटिक तो Pv⁴ इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें हीट इंटरेक्शन नहीं होता है लेकिन टेम्परेचर वेरी करता है। सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस आइसोथर्मल प्रोसेस इज द ओनली प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस in which if a perfect gas undergoes an isothermal process, its temperature will remain constant. Any system when undergoes isothermal process means its temperature remains constant, and especially for ideal gas, temperature remains constant means its molecular internal energy also constant, so that delta U is equal to 0, so that first law equation for a closed system, this equation is actually Q12 is equal to W12 plus delta U is actually the equation, first law equation for a closed system undergoing any process, undergoing any process। एंड साइकिल के लिए तो इक्वेशन होता है सिग्मा W साइकिल इज इक्वल टू सिग्मा Q साइकिल, बट द फॉर एनी प्रोसेस, सपोज आई विल प्लॉट दैट प्रोसेस ऑन ए PV डायग्राम, सपोज दिस इज ए प्रोसेस 1 2, process 1 2, then during that process if suppose Q12 is the heat interaction and W12 is the work interaction, then the equation is Q12 is equal to W12 plus delta U, change in internal energy। And since in this particular question it is given that the equation is Q12 is equal to W12, मतलब हमारा delta U 0 हो गया, मतलब U is equal to constant, and we know that according to Joule's law and especially for perfect gas U is a function of temperature only। U अगर constant हो रहा है तो temperature constant है, और तो temperature constant है मतलब the process is isothermal। So the next question that I am going to discuss was asked in the year 2014 and it carries 2 marks। सेट 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, and the question was like this: a certain amount of an ideal gas is initially at a pressure P1 and temperature T1. First, it undergoes a constant pressure process 1 2 such that T2 is equal to 3T1 by 4. Then it undergoes a constant volume process 2 3 such that T3 is equal to T2 divided by 2. The ratio of the final volume to the initial volume of the ideal gas is, options are 0.25, 1.0, 0.75 and 1.5. So in this case also the system contains ideal gas and initial pressure or temperature दिया हुआ है, that is P1 and T1. First it undergoes a constant pressure process 1 2 such that T2 is equal to 3T1 by 4. T2 T1 से लेस हो रहा है, मतलब T2 is equal to 3T1 by 4, मतलब T2 is less than T1 in this case. So we have to plot the process on PV diagram, then we will be able to answer. Then second, it consists of 2 processes. There are 2 processes that the ideal gas, the system containing ideal gas undergoes. First process is a constant pressure process. This key line is this problems. The key lines of this particular problem first we have to identify. So such that T2 is equal to 3T1 by 4. Then it undergoes a constant volume process 2 3 such that T3 is equal to T2 divided by 2. ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। यहाँ भी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि T2 डिवाइडेड बाई 2 इज T3। सो द रेशियो ऑफ द फाइनल वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस हमको निकालना है। सो हम पहले अगर PV डायग्राम ड्रा करेंगे
ये दोनों जो प्रोसेस है, एक है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सो अगर पी वी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दिस इज पी वी डायग्राम। सो फर्स्ट जो लिखा हुआ है, इट अंडरगोज ए कांस्टेंट, इट्स इनिशियल प्रेशर वाज सपोज P1 T1, pressure was P1 and temperature was T1, and it undergoes a constant pressure process 1 2 such that T2 is equal to 3 T1 by 4. So in which direction we have to draw the 1 2 process 1 2 को कैसे हम प्लॉट करेंगे? You see, first we have to identify whether when the process takes place heat is being added or it is getting heat is being rejected from the system. It is getting heated or it is getting cooled. That we have to know first. That you see, T2 is equal to 3 T1 by 4. T2 is equal to 3 T1 by 4. मतलब T2 T1 से T2 is less than T1. T2 is less than T1. T2 is less than T1. मतलब ये हीट तो रिजेक्ट हो रहा है ना। आइडियल गैस इक्वेशन इज लाइक दिस, P1 V1 इज इक्वल टू MRT1। यहाँ अगर ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा ये, तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा मतलब वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा ना, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। अगर P2 V2 इज इक्वल टू MRT2, अगर T2 T1 से लेस होगा मतलब P2 V2 इज लेस, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है, मास ऑफ गैस, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, R इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अगर T2 T1 से लेस होगा तो MRT2 विल बी लेस देन MRT1, मतलब P2 V2 इज लेस देन P1 V1। P2 तो इज इक्वल टू P1 है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो ये कैंसल्स आउट, सो मतलब V2 इज लेस देन V1। व्हाट वी कम टू द कंक्लूजन इज दैट V2 इज लेस देन V1, बट दैट रेशियो वी हैव टू डिटरमाइन। वी आर श्योर दैट वॉल्यूम विल डिक्रीज, मतलब ये लेफ्ट को जाएगा प्रोसेस 1 2 ऐसे होगा। लेकिन हम V2 बाई V1 भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हो या दिस आइडियल गैस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं और चार्ल्स लॉ से भी निकाल सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन से P2 V2 बाई P1 V1 इज इक्वल टू MRT2 डिवाइडेड बाई MRT1, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, P1 इज इक्वल टू P2। यहाँ से हमको आ गया V2 बाई V1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। And according to Charles law also, according to Charles law also, at constant pressure, volume of an ideal gas is directly proportional to its absolute temperature. Absolute temperature means temperature is denoted by capital T and expressed in Kelvin. So V2 by V1 is equal to T2 by T1. So हमको ये मिल गया V2 by V1 is equal to T2 by T1. According to question, T2 is equal to 3 T1 by 4. T2 is equal to 3 T1 by 4. So T2 by T1 is 3 by 4. 3 by 4. So V2 by V1 हमको मिल गया 3 by 4. सपोज दिस इज इक्वेशन, बट हमको पूछा है फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, रेशियो निकालना है। लेकिन जो दूसरा प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस है, इट अंडरगोज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस 2 3।
2 3 जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, सच दैट T3 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T। यहाँ भी हमको डिसाइड करना है वेदर इट विल गो डाउनवर्ड और अपवर्ड, गो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में तो ये डाउनवर्ड होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो अपवर्ड जाएगा। यू नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू, यह P2 V2 इज इक्वल टू MR T2 एंड P3 V3 इज इक्वल टू MR T3। अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा P3 V3 डिवाइडेड बाई P2 V2 इज इक्वल टू MR T3 डिवाइडेड बाई MR T2, T3 बाय T2 यू कैंसल्स आउट। लेकिन ये जो 2 3 प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब V3 विल कैंसल्स आउट V2 क्योंकि V3 इज इक्वल टू V2। यहाँ से हमको मिल गया P3 बाई P2 इज इक्वल टू T3 बाई T2 एंड T3 बाई T2 इज गिवन एज 1/2। T3 इज इक्वल टू T2 बाई T, मतलब T3 बाई T2 इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से हमको आ गया 1/2। सो P3 बाई P2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब P3 इज इक्वल टू P2/2। सो यहाँ प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होगा मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रह के अगर प्रेशर कम होगा मतलब टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली द प्रोसेस विल गो डाउनवर्ड, वो रिजेक्टेड हो रहा है। दोनों प्रोसेस में heat is being rejected. So this is 2 3 and this law is called also constant volume process is also called Galoshex law. Constant volume process is also called constant volume process is also called constant volume process is called Galoshex law. That states that at constant volume pressure of a gas is directly proportional to its absolute temperature. That is P is proportional to T or P by T is equal to constant when volume is equal to constant. This can also be obtained from ideal gas equation PV is equal to MRT, as I explained earlier during the process 1 2. So P by T is equal to constant. This law is known as Galoshex law. So लेकिन हमको ये पूछा गया है V3 बाय V1 निकालने के लिए। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में इनिशियल स्टेट है 1 और ये फाइनल स्टेट है 3। सो फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम हमको पूछा है। द रेशियो ऑफ द फाइनल वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस पूछा है। सो मतलब V3 by V1 is equal to, we know that during this process V3 is equal to V3 is equal to V2 because this is a constant volume process. 2 3 is a constant volume process. V3 by V1 is equal to V2 by V1। ये जो सेकेंड स्टेप में हम ये लिखे, ये एक्चुअली ज़रूरी नहीं है इस प्रॉब्लम में। फास्ट भी आफ्टर फाइंडिंग आउट द V2 by V1 आर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। वी नीड नॉट गो टू प्रोसेस 2 3, लेकिन आई हैव डिस्कस दिस व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस दिस 2 3 इज। फ्रॉम द फास्ट प्रोसेस 1 2 से हम निकाल सकते हैं रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम
to the initial volume, क्योंकि हमारा V3 तो V3 is equal to V2 because 2 3 process 2 3 is a constant volume process. So V2 by V1 we have already calculated, that is V2 by V1 is equal to T2 by T1. So T2 by T1, T2 by T1, लेकिन T2 by T1 is already given in the question. T2 by T1, T2 is equal to 3 T1 by 4. Yeah, I can find out T2 by T1. Since T2 is equal to 3 T1 by 4, implies T2 by T1 is equal to 3 by 4, that is 0.75. So that is 0.75. From the given options, the option B is 0.75, 0.25, 1 and 0.75 and 1.5. So correct option is option B. It can just be calculated by applying the Charles law for the first process 1 2, that is a constant pressure process. According to Charles law, at a constant pressure the volume is directly proportional to temperature. So V2 by V1 is equal to T2 by T1, that is 3 by 4. but V3 is equal to V2, क्योंकि ये constant volume process है 2 3, तो V3 is equal to V2. We need not find out anything with respect to process 2 3. We know that V3 by V1 will be equal to V2 by V1, and V2 by V1 is equal to T2 by T1, and according to the given data T2 by T1 is equal to 3 by 4 or 0.75. So यहाँ से हम we can find out. So option B is the correct answer. And thank you for watching.